Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to articulate, recognize, and use some formulaic expressions to express limited needs. Honorable teacher, मैंने पिछले ट्यूटोरियल में डायनामिक्स को एक्सप्लेन किया था. अभी ये लफ्ज़ भी चूंकि इस्तेमाल होता रहा है, अभी मैंने सोचा कि मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं. फॉर्मुलाइक एक्सप्रेशंस वर्ड हो सकता है आपके लिए नया हो. फॉर्मुलाइक का मतलब ये है कि फिक्स्ड पैटर्न्स ऑफ वर्ड्स और आइडियाज जो मतलब तय हैं और हम वक्तन फवक्तन उनको इस्तेमाल करते रहते हैं. फिक्स्ड पैटर्न्स हैं, वो बार बार इस्तेमाल होते रहे हैं, उसी तरह होते रहे हैं और होते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अक्सर जब भी कोई बच्चों की स्टोरी किसी लेसन में होती है तो आपने देखा होगा कि उसके जो शुरू के वर्ड्स होते हैं वो होते हैं वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र है. अब ये फॉर्मुलाइक एक्सप्रेशन है, फार्मूला सा बना हुआ है. तो ये आप प्लीज याद रखिएगा. Interact with the text and use reading strategies while reading to guess what follows in a story. Respond to the text post-reading to express likes, dislikes about the story. Identify words that begin with the same sound. Identify words that end with the same sound. Pronounce and match the initial and ending sound of common words depicted in pictures with their corresponding letters. Articulate, recognize, and use some formulaic expressions to listen and respond to a few commands. Demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions in group to express basic emotions like happiness, sadness, anger, etc. Provide the missing letters and simple one or two syllable words with pictures available as cues. Recognize and use a comma in a list. Identify and fill in speech bubbles with given appropriate words and formulaic expressions. And construct simple sentences of 3 to 4 words using correct capitalization, punctuation, and spelling.